Nurse, just another word to describe a person strong enough to tolerate everything and soft enough to understand everyone. It is indeed a high blessing to be first and last to witness the beginning and end of life. In ancient times, the hospitals were horrible. The sick used to go to a temple where they were treated with all medical treatment and an orderly system of prayer and religious offerings. Girls were not preferred to take care of men. Care of the sick was still closely allied with superstition, religion, and magic. People used to believe in tantrics much more than the healthcare facilities or in Western therapies. On 12th of May 1820, a baby girl was born in a small town called Florence in Italy. She was the daughter of well-to-do English parents and they wanted her to become a socialite, but she preferred to avoid it. Florence was active in philanthropy, ministering the sick and poor in the village near her from a very young age. She determined to pursue her true calling. Nightingale approached her parents and told them about her ambition to become a nurse. They were not pleased and discouraged her in many ways. After much of the struggles with her family, Nightingale enrolled herself as a nursing student in Lutheran Hospital in Germany. In 1844, she returned to London after her studies and took a nursing job at Middlesex Hospital, London. In October 1853, the Crimean War broke out between England and Russia, which caused massive casualty and injury to the soldiers. Injured soldiers was taken to various base military camps, but England was in uproar about the neglect of the injured soldiers. Nightingale rose to her calling, assembled a team of 34 nurses, and sailed into Turkey where her duty was assigned. She was shocked to see the overcrowded, unhygienic hospital. Her team started carrying the injured soldiers. Her effort and knowledge brought up the death for the wounded soldiers by 2 doctors. When she was back to London, she was rewarded with a hero's welcome. Andrew Cohen rewarded her work by presenting her an engraved rose that later came to be known as Nightingale Pearl. She was also given a cash award of $1,30,000. She decided to use the award to further because in 1918 she founded the establishment of St. Thomas Hospital, and within it she started the first training school for nurses at Nightingale Training School. निकली थी एक चिराग लेकर, चिराग बन जाऊंगी सोचा न था। शुरुआत तो बस एक मरहम से की, आज इलाज से जुट जाऊंगी कई सांसों की, ये तो सोचा न था। ऊंचाई के शिखर पे पहुंची हूँ आज, हर जगह मेरी परछाई है। अब वक्त बदला है और यहाँ हर किसी को मेरी ज़रूरत समझ आई। कई वर्ष पहले बस GNM ANM तक सीमित थी मैं, अब दुनिया में बदलाव ला चुकी हूँ। BSc को भी हासिल कर चुकी हूँ, नुस्खों से लोगों के जुड़ गई। पहले स्पर्श से आँखों में उजाला करती थी,
आज दवा से भी दर्द को कम करना जानती हूँ। मैं एमएससी को भी हासिल करती हूँ। थ्योरी और प्रैक्टिकल के मेल को समझती हूँ। रिसर्च में भी उपलब्धियाँ पा चुकी हूँ। सिर्फ इंजेक्शन टैबलेट तक ही नहीं, अब टेक्नोलॉजी को भी मैं समझती हूँ। आज कॉलेज भी अधूरे हैं मेरे बिना, क्योंकि आगे की पीढ़ी के ज्ञान में भी सहयोग जो मैं दे रही हूँ। आज कहाँ तुम्हें मैं नहीं मिलूँगी। नर्स, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर, रिसर्चर, माँ के दर्द और बच्चे की चहचहाहट से जो जुड़ती हूँ, मुझे मिडवाइफरी और पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं। जहाँ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ईसीजी की तारों से जुड़ती हूँ, मुझे मेडिकल सर्जिकल नर्स कहते हैं। जब किसी के इमोशंस और साइकोलॉजी से जुड़ती हूँ, मुझे मेंटल हेल्थ नर्स कहते हैं। जहाँ लोगों के घरों से बीमारियों को दूर करती हूँ, तो मुझे कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं। उन सरहदों पे भी जब किसी की मुस्कुराहट बनती हूँ, मुझे मिलिट्री नर्स कहते हैं। बस अपने देश में नहीं सिर्फ, बल्कि फॉरेन में भी पंख अपने उड़ा बैठी हूँ। देख रहे हो एक चिराग लेकर जो निकली थी, कहाँ तक मैं उसका प्रकाश फैला चुकी हूँ।